Assalamu alaikum. Hello and welcome back to another exciting video on CS circuit. Well, I hope you all are enjoying your good health. This video is about computer science grade 9th, and here we are discussing short lecture notes of unit number 1. So here is part 4, and if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well, okay? So let's start with procedural structure programming languages and OOP. The best part is you have multiple important short question answers along with topic, okay? सौ इससे आपके शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी इजीली, ठीक है? Question number 1 is what are procedural and structured programming languages? How does OOP differ from procedural programming? Why do we use different types of programming languages like procedural and OOP? Which type of programming language is best for organizing complex programs and why? ओके सो आपको इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इसी स्लाइड में और दो बल्कि दो स्लाइड्स में आपको जो है वो मिल जाएगा इजीली, ठीक है? Procedural languages like C, it basically focus on step by step instructions, ठीक है? जो complex task है उनको divide किया जाता है functions में ताकि उनको easily जो है वो manage किया जा सके, ठीक है? Structured languages add organizations by using blocks of code and structures which help with clarity and reusability. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है जिसके जावा है, पाइथन है, ठीक है? They go further by organizing code around objects which bundle data and functions together and making them great for larger more complex programs. और इसमें भी जो है वो reusability के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है easily, ठीक है? Each type has its own strengths like procedural is used for clear steps, structural for organizing tasks and OOP for handling complex data and relationships. ये जो लास्ट लाइन है इसमें बेसिकली इसके एडवांटेजेस बताई गई हैं, ठीक है? यू अगर आपसे कोई पूछता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इस लाइन में आपको उसके एडवांटेज भी इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्वेंस सिलेक्शन इन रेपिटेशन. How does sequence help in writing a program? What is the purpose of selection in programming? Why do we use repetition in programs? सीक्वेंस सिलेक्शन और रेपिटेशन जो है वो बेसिकली फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग की, ठीक है? सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप जो भी कोई प्रोग्राम है उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? ताकि कोड को जो है वो करेक्टली रन किया जा सके और उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है? सिलेक्शन अलाउज प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन. जैसे कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ़ एल्स है या एल्स इफ़ है, इसमें कोई जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक कंडीशंस पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? Alright, so repetition or looping basically repeats a set of instructions until a condition is met, which is helpful for tasks like processing lists or repeating calculations. Alright, basically लूपिंग कंडीशंस को या लूप को तब यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो रेपिटेडली परफॉर्म करना होता है, ठीक है? until a specific condition is met. Alright, next we have uses of high and low level languages. लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव एग्जांपल्स ऑफ टास्क्स बेस्ट सूटेड फॉर ईच टाइप ऑफ लैंग्वेज. व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन हाउ वी यूज लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अच्छा, low level languages are basically assembly or machine and are used when programmers need direct control over hardware. Basically low level languages are near to computer, ठीक है? These languages are in binary form, ठीक है? These are used for creating device drivers and operating systems, okay, where speed and efficiency are important. And high level languages like C++, Java and Swift are commonly used for app development because they are easier to write and understand for faster creation of complex applications. अच्छा, बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन, ओके? इनका जो सिंटैक्स होता है इट्स सिमिलर टू
इंग्लिश ग्रामर। ओके, जैसे इंग्लिश में हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, इट्स रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और उर्दू इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग है उसको भी किसी स्पेसिफिक ग्रामर के मुताबिक जो है वो उसमें इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, देन एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ मोर ईजी टू अंडरस्टैंड एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ओके, देन इनको जो है वो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, गेम डेवलपमेंट के लिए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए, टू हेल्प मैनेज कम्प्लेक्स ग्राफिक्स एंड साउंड। और लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो हार्डवेयर कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, while high level languages allow for faster development and user friendly applications. Okay, so next topic is data communication and its components. What is data communication and why is it important in networking? Question number 2 is what are the main components of network communication? Question number 3 is how do these components help in transferring data over a network? Data communications basically involves transferring information between devices and depends on several key components, and these components are basically sender, receiver, message, medium and protocol. Okay, सेंडर बेसिकली वो डिवाइस होती है जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाती है, ठीक है। मैसेज आपके पास कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फाइल, ओके। एंड देन वी हैव रिसीवर, इट्स बेसिकली द डिवाइस दैट गेट्स द मैसेज। मीडियम आपके पास उस चैनल को कहा जाता है दैट इज कैरिंग योर मैसेज, ओके, लाइक केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स। एंड प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स दैट both sender and receiver follow to ensure the message is understood correctly. Okay, प्रोटोकॉल के बगैर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो सकती हैं बट वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लाइक TCP IP FTP SMTP आर different protocols. Okay, all right, thank you. So that was all about short lecture notes part 4, and if you have any query you can do let me know in comments, and if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe as well. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।